Hello friends, myself Dr. K.S.Kulkarni and I am from Gokhale Education Society's Arts, Commerce and Science College, Jawad. So friends, I welcome you all for the TYBSc Inorganic Chemistry Semester 6 in the topic of some selected topics. So friends, in our last lecture we have discussed about the chemistry of group 18 elements. We have discussed that they are all inert or we can say noble gases and how their discovery was there. So we have also discussed about um, their occurrence, which when just revise in 2 minutes, that group 18 elements are actually called as noble gases or inert gases due to completely filled valence shell. So if we discussed about their electronic configuration, we can say that they have ns2 np6 outer configuration, and in that case their octet is completed. So in their outermost shell उनका जो octet होता है वो complete होता है, and therefore they have filled ns2 and np6 outer configuration. So in this case we can also seen that helium has 2 electron in its outer shell and it has completed first shell with 1s2 configuration. So therefore all the group 18 elements have most stable configuration. उनकी जो आउटर मोस्ट शेल है उस शेल में NS2 एंड NP6 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो completely filled होते and therefore they show very stable electronic configuration. Hence under normal condition they do not have any tendency to lose or gain electron. तो अगर हम लोग उनके एटॉमिक नंबर की बात करें, सो हेलियम इज़ 2, नियॉन इज़ 10, argon is 18, krypton is 36, xenon is 54 and radon is 86. So they have completely filled outermost orbitals and therefore they have very less tendency to lose or gain the electrons. Therefore they are also called as noble gases. Then their second physical property is monoatomicity. So under the normal condition they are colorless, odorless and tasteless monoatomic gases. मोनोएटॉमिक क्यों कहा जाता है कि जैसे O2, N2, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन डायटॉमिक स्टेट या डायटॉमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म में दिखाई देते हैं, ऑकर होते, उस तरह इनका नहीं होता. बिकॉज दे हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, there is no need to formation of diatomic molecule. So they always occur as a monoatomic gases. The monoatomic nature is confirmed by their specific heats at constant pressure. So their value for specific heat is close to 1.6 and therefore they are very stable monoatomic gases. थर्ड अगर उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो इट इज़ अबाउट एटॉमिक रेडियाई. सो देयर एटॉमिक रेडियाई आर वेरी लार्ज एंड एज एक्सपेक्टेड दे इंक्रीज ऑन गोइंग डाउन इन द ग्रुप. तो ये जो ग्रुप है, लास्ट वाला ग्रुप हेलियम से लेके रेडॉन तक, तो एज वी गो डाउन इन आवर ग्रुप वो जो एटॉमिक रेडियाई है उसके साइज़ में इंक्रीज दिखाई देती है. द थर्ड physical type is about its ionization energy. So ionization energy और electron affinity के बारे में बात करेंगे. So they have highest ionization energy as respective to the periodic table. पूरे periodic table में सबसे highest ionization energy noble gases की दिखाई देती है. Also they have almost zero electron affinity, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ना लूज करते हैं ना गेन करते हैं, एज दे हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड देयरफॉर दे शो ज़ीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट statement that they have highest ionization energy and they have almost zero electron affinity. Then next property is about melting and boiling point. So melting and boiling point of noble gases is very low. This is because of very weak interatomic forces of attraction. As we all know that melting and boiling point are because of
इंटर एटॉमिक फोर्सेस, लेकिन इनके बीच जो इंटर एटॉमिक फोर्स है वो बहुत वीक होता है एंड द इंटर अट्रैक्शन of the noble gas atom is due to the slight mutual polarization of the atom. So therefore there is very weak induced dipole moment, and also there are very weak van der Waals forces. So since they have stable configuration, the atoms are polarized only with very difficult situation, and therefore the melting and boiling point of helium are the lowest of any other element. So therefore overall अगर हम लोग बात करेंगे, so it is observed that as the atomic size increases, the polarizability of the atom also increases, and therefore the melting and boiling point increases as we go down in the group. तो ऑलरेडी उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होता है, लेकिन ग्रुप में ये जो नोबल गैस का ग्रुप है उसमें अगर हम टॉप से लेके बॉटम तक जाएंगे तो धीरे धीरे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट स्लोली इंक्रीज होता हुआ दिखाई देता है. देन द नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी इज लिक्विफिकेशन. So the noble gases are liquefied and solidified with very difficult situation. The fact is that their again electronic configuration is fulfilled, and therefore there are very weak forces of attraction in between their atoms. The enthalpy of the vaporization, which is a measure of force holding the atom together, is very low. तो ये force बहुत low होने के वजह से as there is increase in atomic size, the enthalpy of vaporization also increases, and the van der Waals forces are also very weak. Therefore it is very difficult for the gas to get liquefied. So all these noble gases except radon, they get solidify around 280 degree Kelvin. So it is observed that liquid helium is therefore used as an ideal cooling agent for research at very low temperatures. Next जो physical property है, that is ability to diffuse. So all noble gases able to diffuse through glass, rubber, plastic material and also through some metals. Easily वो diffuse हो सकते हैं इन सारे material के through. Hence they are difficult to handle in the laboratory for low temperature research work. उसको स्टोर करके रखना प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि वो ग्लास, रबर, प्लास्टिक मटेरियल और कुछ मेटल के थ्रू पास हो सकते हैं, डिफ्यूज़ हो सकते हैं, एंड देयरफॉर उनका स्टोरेज ही डिफ़िकल्ट है. देयरफॉर दे आर डिफ़िकल्ट टू हैंडल इन द लेबोरेटरी. नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी इज अबाउट द solubility in water. So these gases are only slightly soluble in water. However, solubility increases with increase in their molar mass. पानी में ज़्यादा solubility नहीं दिखाते. Then there is very important property which is called as peculiar properties of helium. तो हेलियम ऐसी क्या प्रॉपर्टी दिखाता है? हेलियम इज़ अ यूनिक एज लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट. उसका बॉइलिंग पॉइंट पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे लो है. So all the other elements get solidified on cooling, but helium remain liquid and it can form solid at only very high pressure. So helium show two different liquid phases. किसी भी अदर एलिमेंट को अगर हम लोग प्रेशराइज करते तो वो सॉलिडिफाई होता है, बट द केस फॉर हेलियम इज़ डिफरेंट. वो सिर्फ दो अलग अलग लिक्विड स्टेजेस दिखाता है. So helium 1 is a normal liquid, but helium 2 is a superconductor, superfluid, okay, and it is unusual state of matter. So suppose we start boiling the helium, what will happen? At 4.2 Kelvin it liquefies as helium 1 and it will continue to boil. अगर temperature 4.2 Kelvin तक आता है तो helium liquefies हो जाता है and it continues to boil vigorously. But suppose you still decrease the temperature and when it comes 2.2 Kelvin, the liquid suddenly stop boiling and there is formation of helium 2. This helium 2 is very different in nature.
as its interatomic forces are not strong enough to form a solid, and there is a thermal motion of atom has stopped. So when this helium 1 slowly changes into helium 2, its physical property changes very abruptly. उसके सारे physical property एकदम से change हो जाते हैं. The specific heat changes by a factor of 10 unit. Viscosity जो है liquid की बिल्कुल 0 हो जाती है, and the thermal conductivity increases by 10 raised to 6 power, and at this stage this helium becomes a superconductor. So obviously superconductors are very important for us, and therefore helium 2 is a special liquid which directly act as a superconductor. So therefore it's very important for us. तो इस तरीके से ये जो सारे नोबल गैसेस है, they have very unique type of physical properties and they have unique importance in our periodic table. So जब तक ये नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुए थे, the periodic table was seems to be incomplete because in the Mendeleev periodic table there was a sudden change from strong electronegative halogen to the strong electropositive alkali metal. अभी हमारा पीरियोडिक टेबल कंप्लीट है, जिसके लेफ़्ट साइड में, एक्सट्रीम लेफ़्ट साइड में क्या है, देर आर ऑल इलेक्ट्रोपॉजिटिव अल्कली मेटल्स, और एक्सट्रीम राइट साइड में कौन है, देर आर ऑल इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजेंस. लेकिन जैसे ही नोबल गैसेस का डिस्कवरी हुआ, इन दोनों को जोड़ने वाली एक कड़ी मिल गई. सो आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस, their placement in the periodic table between halogen and alkali metal in each period is very important, and the transition from electronegative to electropositive nature is now explained. मतलब electropositive metals और electronegative halogen, इनको जोड़ने वाली नोबल गैसेस की कड़ी लिंक हो गई. So the chemical inactivity, or we can say the inertness of noble gases, help us in formulation of electronic theory of valency. तो अलग अलग साइंटिस्ट ने जो थियरीज दी थी वो भी नोबल गैसेस की वजह से कंप्लीट हो गई. सो द फॉर्मेशन ऑफ इफेक्टिव नंबर और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल इज ऑल्सो एक्सप्लेन बिकॉज ऑफ द discovery of noble gases. So this way we can say that the whole chemistry of inorganic element is explained directly or indirectly on the basis of stable electronic configuration of noble gases. So the discovery was very much important as far as overall inorganic chemistry is concerned. Then we will see the trends of chemical properties. So what are different chemical properties of group 18? सबसे पहले है कि they have stable electronic configuration. Since they have more stable electronic configuration, they showed least chemical activity. अगर electronic configuration fulfilled है, complete है, तो obviously वो कम electronic affinity दिखाएंगे and there will be very less chemical activity. So many attempts were earlier made that we can make these elements to react with other element to form compound, but all these attempts were failed to introduce any activity in noble gases. So the three main reason we can say कि why these noble gases do not show any type of activity, because the first one is that the atom of these elements have completely paired electron. उनके अंदर क्या है, जो सारे इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्ड है, एंड हेंस देर इज़ कंप्लीट एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड दैट इज़ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन. तो देर इज़ एब्सेंस ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंड देयरफॉर देर इज़ no activity, no chemical activity is seen. Second important reason is that due to complete pairing of electron, the magnetic moment of orbits are balanced. Hence, the atom of these elements have more stable energy states. Then we can say that they have balanced magnetic moment. Due to complete pairing of electron,
उनके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो भी पूरी तरह से बैलेंस दिखाई देता है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट इज दे हैव हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल. सो the elements which are characterized by high ionization potential they have very negligible electron affinity. तो अगर इलेक्ट्रॉन के साथ कोई एफिनिटी नहीं है, so there is no tendency to gain or lose any type of electron, and therefore because of low electron affinity they do not show any type of chemical reaction. So initially it was said that they are completely inert. ये जो कंपाउंड्स है, जो एलिमेंट्स है, वो कैसे है, कम्प्लीटली इनर्ट है. बिकॉज ऑफ दिस ओवरऑल प्रॉपर्टी दे डू नॉट फॉर्म एनी टाइप ऑफ कंपाउंड. लेकिन स्लोली क्या हुआ, इन 1962 फर्स्ट कंपाउंड ऑफ इनर्ट गैस वॉज रिपोर्टेड. ओके, एंड दैट टाइप ऑफ कंपाउंड विच वॉज फॉर्म by the noble gases is called as clathrate compound. So this is interesting compound and hence more studies were carried out about the clathrate compound. तो कैसे compound ये noble gases form करते हैं. So the word clathrate has been derived from the Latin word clathrus. Okay, so ये clathrus का meaning क्या है कि enclosed, किसी cavity के अंदर अगर कोई एटम या मॉलिक्यूल क्लोज है तो उसे क्लैथरेट कंपाउंड कहा जाता है. सो क्लैथरेट कंपाउंड्स आर दोज इन विच वन कंपोनेंट इज ट्रैप्ड इन द क्रिस्टल लैटिस ऑफ अदर कंपोनेंट. ओके, एंड द क्रिस्टल स्ट्रक्चर विद द कैविटी इज कॉल्ड एज होस्ट. मतलब जहाँ पे हम लोग बाहर का अगर जो केज है, पिंजरा है, उसे कंसिडर करेंगे तो उसे क्या कहा जाता है, होस्ट. तो इस डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं दैट आउटर मोस्ट जो मॉलिक्यूल्स है वो एक केज की तरह स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, एंड इनसाइड दैट केज देयर इज़ अ गेस्ट एटम. ओके, मतलब बाहर का जो केज है या फिर कैविटी है उसे हम लोग होस्ट मॉलिक्यूल कहते हैं, और उसके अंदर जो एटम ट्रैप हो जाता है उसे हम लोग गेस्ट मॉलिक्यूल कहते हैं. So until recently only some clathrate compounds were discovered, but after that slowly various type of compounds of clathrate or we can say noble gases were observed. तो लेफ्ट साइड के डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं दिस इज़ कॉल्ड एज द क्लैथरेट ऑफ क्विनोल मॉलिक्यूल. ओके, क्विनोल मतलब देखो बेंजीन रिंग और उसके ऑर्थो पोजीशन पे 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है. तो ऐसे ये 3 मॉलिक्यूल मिलके एक कैविटी बना रहे और इस कैविटी के अंदर कोई भी नोबल गैस ट्रैप हो सकता है. तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्रिप्टॉन और अर्गॉन इज ट्रैप्ड इनसाइड द कैविटी ऑफ क्विनॉल एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ क्लैथरेट कंपाउंड. ओके, सो द अदर डायग्राम इज ऑफ नियॉन. नियॉन भी इस तरीके से क्लैथरेट कंपाउंड बना सकता है या अर्गॉन भी बना सकता है. सो इन अ सिमिलर वे द गैसेस लाइक अर्गॉन, क्रिप्टॉन एंड xenon they get trapped even in the cavity of water under frozen condition. Okay, so 6 water molecule with 1 inert gas molecule they can form a clathrate compound. Also there is example of synthetic zeolites. तो ये जो zeolites है they can also form cavity and they can trap noble gases inside that. Also a strong type of dipole is observed in this clathrate compound where there is formation of the clathrates of argon, krypton and xenon with different type of other water molecule, or we can say deuterium water molecule, or also they can even form with the benzene derivative or phenol derivative. So this way the outer cavity is host cavity and the inner molecule or atom of noble gas is the guest molecule. So this way the clathrate compounds of noble gases can be formed and even they can observed in nature in abundant manner.
Even it is observed that the stability of this compound increases as the size of noble gas increases. So, initially it was said that there is no formation of compound, but after discovery of noble gases, the formation of compounds of noble gases were observed. Then in our next lecture we will discuss about the other chemical properties and the formation of these different compounds of noble gases. Till that, you take care and stay safe. Thank you.